Now we'll discuss heterotrophic mode of nutrition. As we all know, the mode of nutrition in which an organism obtains its food from other organism are known as heterotrophic mode of nutrition. It is of various three types. There are 5 steps of nutrition in animals basically. The first one is ingestion. As its name indicates, in means inside. Ingestion means intake of food inside the body of an organism is referred as ingestion. एक ऑर्गेनिज्म का अपनी बॉडी के अंदर फूड ले जाना क्या कहलाता है? इंजेक्शन कहलाता है. There are various type of organisms like unicellular, multicellular, and they live in various habitats, various environmental conditions. So the mode of ingestion is different in every organism. For example, in Amoeba, which is a unicellular organism, the ingestion occurs through pseudopodia. Pseudo means false and podia means feet. Pseudo का मतलब होता है false, झूठे, नकली, और podia means feet. They are referred as pseudopodia because they keep on appearing and disappearing. इनको झूठे पैर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बनते रहते हैं और रिमूव होते रहते हैं. ये pseudopodia इनको मूवमेंट में भी हेल्प करता है और साथ साथ इंजेक्शन में भी. Second is paramecium. In paramecium, all over its body is covered by a hair-like structure known as cilia. Cilia moves like this, and by this movement, they push the food into a special pore named as cytopharynx. पैरामीशियम की बॉडी पर एक स्पेशल पोर होता है जिस पोर का नाम है साइटोफेरिंक्स, और इस पोर के थ्रू पैरामीशियम अपने फूड को इंजेस्ट करता है. इन ह्यूमंस, एज वी ऑल नो, द इंजेक्शन, द इनटेक ऑफ फूड टेक्स प्लेस थ्रू आवर माउथ. The second step is digestion. The breakdown of complex food into simple food molecules is known as digestion. Complex food molecules का simple food molecules में break होना क्या कहलाता है? Digestion. Digestion is of 2 types basically. One is physical digestion, in which the largest food particles are broken down into simple or smaller ones. For example, in our body, the physical digestion is done by teeth in our mouth, in our buccal cavity. The second is chemical digestion. Chemical digestion is done by enzymes. There are special enzymes named as digestive enzymes which helps in the chemical digestion. Chemical digestion means the chemical molecule is broken down into another chemical. One chemical is changed into another chemical. Then what's the difference in that? The complex chemicals are broken down into the simple ones. This is what the chemical digestion is all about. On the basis of site of digestion, digestion is of 2 types. ये तो था बच्चों कि फिजिकल नेचर और केमिकल नेचर के बेसिस पर, और ये जो टाइप ऑफ डाइजेशन है ये है साइट, जगह के बेसिस पर. In some organisms, digestion takes place, the breakdown of complex food into simple food takes place inside the body. Intra means inside the body. That is in the humans. Whereas extra means outside the body. The mode of digestion which occurs outside the body of an organism. इस मोड ऑफ डाइजेशन में क्या होता है? पहले ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी से एक डाइजेस्टिव एंजाइम छोड़ता है बाहर की तरफ, और वो एंजाइम्स बाहर ही डाइजेशन करते हैं और उस डाइजेस्टेड फूड को फिर ऑर्गेनिज्म इंजेस्ट करता है. द एग्जांपल ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन इज फंजाई. ब्रेड मोल्ड आर फर्दर डिफरेंशिएशन ऑफ फंजाई. ब्रेड मोल्ड डू द सेम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, दैट इज दे डाइजेस्ट द फूड आउटसाइड देयर बॉडी. थर्ड स्टेप इज एब्जॉर्प्शन. In the second, the food is broken down into simple food particles to produce energy. Absorption, that digested food is absorbed by various modes. For example, in unicellular organism like amoeba and paramecium, absorption directly takes place in cytoplasm. Whereas in multicellular complex organisms like in humans, the absorption takes place in specialized organ, that is small intestine. The fourth step is assimilation. Why we are digesting the food? To produce energy. And why we require energy? For growth and development. So the assimilation is the use or the utilization of the digested food to produce energy. Assimilation क्या है? जो फूड हमने डाइजेस्ट किया है वेरियस मेथड से, वेरियस ऑर्गन्स में, वेरियस टाइप्स में, उस फूड को यूज किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है बॉडी के द्वारा, ताकि वो क्या प्रोड्यूस कर सके? एनर्जी प्रोड्यूस कर सके और अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट को पूरा कर सके. The last is digestion. After all this process, the waste material, the undigested material which is left, is removed out of the body, is excluded out of the body, and that step is known as ingestion.
That is the removal of undigested food through specialized organs or specialized membranes in the body is referred as ingestion. In unicellular, the ingestion occurs through their cell membrane. In multicellular complex organism, there are specialized organs. Like in humans, there is an organ named as anus for ingestion of undigested food. After this, we study these 5 steps in amoeba. These are the 5 steps of nutrition in amoeba. Amoeba, as we all know, unicellular organism. It cannot see the food particle. It can only chemically receive the signals from the food particle. Whensoever amoeba observes the food near it, it releases the chemicals in all the directions, and the chemoreceptors present in the amoeba cell helps it to ingest the food or helps it to approach it. Then by the help of pseudopodia, it moves and approaches the food, and by the help of same pseudopodia, it ingests the food. So ingestion of food in amoeba takes place through pseudopodia. Basically, these pseudopodia goes below the food as well as the above and covers it and close it and makes a food vacuole inside the cell of amoeba. Pseudopodia क्या करते हैं? Food vacuole के नीचे की ओर और ऊपर की ओर उसे कवर करते हैं और उसके बाद उससे एक vacuole, एक थैली जैसी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं. That is known as a food vacuole. Then amoeba is a unicellular, so cytoplasm contains certain digestive enzymes. amoeba एक unicellular organism है, तो इसी के cytoplasm में digestive enzymes हैं, which it release into that food vacuole, जो इन food vacuole में इस रे से रिलीज कर देता है. ये digestive enzyme इस food vacuole में जाते हैं, food को simple molecules में तोड़ देते हैं, and then the food is absorbed into the cytoplasm itself, as it is a unicellular organism. इसमें और cells और organs नहीं है, तो ये जो digested food है ये cytoplasm में ही absorb हो जाता है. After the absorption, the food is utilized by the amoeba to grow. और इस दोनों फिगर में अगर हम देखें तो थोड़ा सा साइज का डिफरेंस बनाना है आपको डायग्राम. हल्का सा बड़ा करना है, ज्यादा बड़ा नहीं करना है. amoeba is a unicellular organism, the volume of cell almost remain constant. तो फूड एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब के बाद उसे यूटिलाइज कर लिया गया, एनर्जी प्रोड्यूस की गई एंड द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर्स. आफ्टर दैट what is left in the vacuole is undigested food. That is, now it is considered as waste vacuole. This waste vacuole will starts to move towards the membrane, ruptures it, and the waste is excluded out from the body through their general body surface, or we can say cell membrane. ये वैक्यूल धीरे धीरे मूव करना शुरू करता है वेस्ट को लेकर किसकी तरफ? सेल मेम्ब्रेन की तरफ. सेल मेम्ब्रेन रप्चर होती है और वेस्ट को बाहर निकाल दिया जाता है और ये वैक्यूल की मेम्ब्रेन उस सेल मेम्ब्रेन को दोबारा से हील कर देती है. एंड दैट्स हाउ इजेशन टेक्स प्लेस इन अमीबा. एंड दीज आर द बेसिक न्यूट्रिशनल स्टेप्स इन अमीबा. नाउ we'll study nutrition in humans. In humans there is a specialized system present for digest the food, to absorb the food, and for the assimilation of it, and that is known as digestive system. So for the definition of digestive system, what we write is, it is a complex organ system composed of digestive organs. What is digestive system? एक ऐसा complex system है जिसमें बहुत सारे organs हैं जो digestion में help करते हैं, उसे हम digestive system बोलते हैं. Digestive system is composed of two various parts, two various things. One is alimentary canal. It is a long tube which starts from mouth and ends at anus, is known as alimentary canal. And this is the diagram of human digestive system. It composed various parts like mouth, then food pipe, that is also referred as esophagus. It's a 25 centimeter long tube. Then stomach, it's a J-shaped organ which is present on the left side of the body in the abdominal cavity. This cavity is known as abdominal cavity. Then there is a small intestine. It is the longest part. It is formed in a coiled manner in the body. In the abdominal cavity it is present. Then it is a large intestine. It is referred as large because of its more diameter, not of its size. Large intestine को large इसलिए बोलते हैं कि उसका diameter बड़ा है, इसलिए नहीं कि उसकी length ज्यादा है. Length के according small intestine बड़ा है, but small intestine को small भी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसका diameter छोटा है, इसकी थिकनेस कम है, और लार्ज इंटेस्टाइन की थिकनेस ज्यादा है. स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं मेन, एक ड्यूडेनम, जेजिनम और इलियम.
इसी तरह से लार्ज इंटेस्टाइन की भी वेरियस पार्ट्स हैं. पहला है सीकम. दिस पार्ट इज नोन एज सीकम. देन देयर इज अ कॉलन. दिस इज असेंडिंग कॉलन. दिस इज ट्रांसवर्स कॉलन एंड दिस वन इज डिसेंडिंग कॉलन. इतनी डिटेल नहीं है बट फिर भी ये 3 पार्ट है जो आपको पढ़ने चाहिए इसके. द लास्ट पार्ट इज रेक्टम एंड द लास्ट ऑर्गन, द लास्ट पार्ट ऑफ complete alimentary canal is anus. We'll study them in one by one manner. The second part of the digestive system of humans is digestive glands. These are the glands which release certain specific enzymes which helps in the digestion of food. The 3 major glands present in the digestive system of humans is salivary glands. It is present in the neck region, above the neck region, below the tongue cavity. The second is liver. It is present on the right side of the abdominal cavity. And the last one is pancreas. It is present in the abdominal cavity below the stomach. It's a leaf-like gland. You can see it in the diagram. It's below the stomach, liver on the right side, and salivary glands are present in here. So these total in whole referred as a digestive system. First we'll discuss mouth. Ingestion of food takes place through mouth. The first step of nutrition is ingestion, as we all know. That ingestion, the intake of food in humans takes place through mouth. हम सभी जानते हैं बच्चे, हम intake of food mouth के थ्रू करते हैं. There's a cavity present in our mouth, which is buccal cavity. इस डायग्राम में हम देख सकते हैं buccal cavity. हमारा जो माउथ है बच्चे वो एक स्ट्रक्चर है which is covered by the lips, upper lip and the lower lip. उसके बाद यहाँ पर teeth है. टीथ जो है वो फिजिकल डाइजेशन करते हैं बच्चों माउथ में. कैसे? च्यूइंग से. एज वी ऑल नो द च्यूइंग इज वेरी नेसेसरी फॉर फूड. बाय च्यूइंग वी फिजिकली डाइजेस्ट द फूड. दैट मीन्स वी ब्रेक डाउन द लार्ज फूड पार्टिकल्स इनटू द स्मॉलर वन बाय द हेल्प ऑफ आवर टीथ. आफ्टर दैट द केमिकल डाइजेशन स्टार्ट्स इन माउथ एज वेल. दिस केमिकल डाइजेशन occurs by the help of saliva. Saliva को हम थूक बोलते हैं, which is very important part of our body, which helps in the digestion of starch. Starch is a complex carbohydrate which is broken down, which is starts to broken down into simple substances in the mouth itself by the activity of an enzyme present in the saliva, and that enzyme is the salivary amylase. तो अगर बच्चों क्वेश्चन आ जाए कि which is the first enzyme which occurs or which performs the function of digestion on the food, and that first enzyme is salivary amylase, which is present in the saliva, which is secreted by salivary glands. This salivary amylase is also known as a ptyalin. P is silent here. It is referred as ptyalin. That ptyalin will break the starch into maltose, isomaltose and alpha dextrins. 3 substances are produced from starch in the mouth: maltose, isomaltose and alpha dextrins. 30% of the total digestion occurs in mouth. This process composed of 30% of the total digestion. Then a question may come in your exam, that is what are the functions of saliva? कि saliva जो हमारे माउथ में वो क्या functions perform करता है. पहला digestion बच्चे, as salivary amylase present in saliva, so it helps in the digestion of food. You can write that in the second point. Then moistening of food, it moistens the food. ये फूड बोलस को मॉइस्ट करता है ताकि फूड आगे की एलिमेंट्री कैनाल में आसानी से मूव हो सके. देन लाइसोजाइम्स आर सर्टेन एंजाइम्स और सर्टेन पार्टिकल्स, केमिकल्स प्रेजेंट इन द saliva which kills the microorganisms. The second part is esophagus. After mouth, we swallow the food. We done like this, and the food is moved voluntarily into the pipe that is referred as food pipe or esophagus. This pipe. It is a 25 centimeter long tube present in the adult human being. No digestion takes place here. It's a very important thing to notice that no digestion whatsoever takes place in the esophagus or food pipe. But still, there is a very important question related to it, and that is peristalsis. It is also referred as peristaltic movements. देखो बच्चों, जब हम फूड स्वॉलो कर लेते हैं, हम फूड निगल लेते हैं, उसके बाद हम फूड को मूव या पुश नहीं करते. द फूड मूव्स इनवॉलंटरली. इनवॉलंटरली मींस विदाउट आवर विल. हमारी इच्छा के बिना फूड अपने आप नीचे की ओर मूव करता है.
और ये मूवमेंट कैसे होती है? पेरिस्टालसिस की हेल्प से. व्हाट इज पेरिस्टालसिस? द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ इनर ईसोफेजियल वॉल. रिदमिकली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है. एक बार कॉन्ट्रैक्ट करती है पार्ट, एक बार रिलैक्स, एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक बार रिलैक्स. ड्यू टू दैट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन द फूड पार्टिकल्स विल मूव डाउनवर्ड्स. This rhythmic contraction and relaxation of the inner esophageal wall to move the food bolus into the stomach from mouth is referred as peristalsis. After peristalsis, the food will move into the third part of the digestive system, alimentary canal, that is the stomach. Stomach is the widest part of the alimentary canal. It is further differentiated into three parts. The upper part is referred as pyloric, the middle part is referred as the body, and the last part is referred as fundus. Stomach has a inner wall which is release a digestive juice named as a gastric juice. Gastric word is always related to the stomach. Gastric juice is composed of three things. It's a very important question, so read it carefully and write it as well. The first part is HCl, hydrochloric acid. Hydrochloric acid released in stomach. It performs a various function, out of which the first is softening the food. The food which is to be moved after the stomach in the small intestine must be softened enough, and that softening is done by the HCl. Second, as we open our mouth to ingest the food, that will also allow the microorganisms to go along with our food. Some of that microorganism part will go from our buccal cavity to the stomach. In the stomach, that killing of the microorganism occurs by the help of HCl. तो बच्चों दूसरा फंक्शन जो परफॉर्म करता है HCl वो क्या करता है? जो भी माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे फूड के साथ मिलकर स्टमक तक आ गए हैं उन माइक्रोऑर्गेनिजम्स को एसिडिक कंडीशंस किल कर देती है. नेक्स्ट, थर्ड इज एक्टिवेट्स द इनएक्टिव एंजाइम. This gastric juice contains certain digestive enzymes. Those digestive enzymes are produced in the inactive forms. These two are the inactive forms. First one is pepsinogen and another one is prorenin. In the presence of acidic condition, that is H positive ions, which are produced by the acid obviously. In the presence of these acidic condition, these inactive enzymes will convert it into their activated form. So for the activation of digestive enzymes, HCl is required. This pepsin helps in the digestion of proteins in the stomach. It will convert the proteins into peptones and proteoses. Pepsin जो है वो proteins को peptones और proteoses में convert कर देता है. Next, renin, digestive enzyme, which is formed after the activation of prorenin, that will help in conversion of casein, which is a milk protein, to paracasein. The soluble form casein to an insoluble form, that is paracasein. Next, the second thing is mucus. Now बच्चे, we all know that acids are corrosive in nature. हम सब जानते हैं कि acids corrosive nature के होते हैं. तो बच्चों HCl हमारी स्टमक की इनर लाइनिंग को नुकसान पहुंचा सकता है. तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए एक थिक स्लाइमी सब्सटेंस, एक थिक जेली लाइक सब्सटेंस रिलीज किया जाता है, विच इज म्यूकस. म्यूकस क्या करता है? स्टमक की इनर वॉल के ऊपर एक लेयर बनाता है, जिस लेयर के ऊपर HCl आता है, जिससे हमारी स्टमक की वॉल के डायरेक्ट कांटेक्ट में HCl नहीं आ पाता. एंड दैट्स हाउ म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर वॉल ऑफ स्टमक फ्रॉम HCl. There is one more function performed by the HCl in our stomach, that is the inactivation of salivary gland. As we all know, after the fulfilling of our hunger, we stop eating. The food will remain for 1 to 6 hours in the stomach. After eating the food, after the completion of eating of food, the salivary gland will inhibit. Salivary secretion रुक जाता है, and that inhibition is done, that stoppage of salivary gland is done by HCl. So these are the functions performed by the stomach. One question is very important, and that's an NCERT question which you have to read very carefully. That is, what is the role of HCl in the digestion? Next part is small intestine. It is the longest part of the alimentary canal, but its diameter is small. Its diameter in an adult is 2.5 to 3.5 centimeter only.
whereas its length is 6.25 to 6.5 meter. It is differentiated into three parts. Duodenum, which is 0.25 to 5 meter long. Jejunum, it is 2.5 meter long. And ileum, which is the longest part among all these three, that is the 3.5 meter long. Iron is absorbed in the duodenum part, as well as duodenum is the widest part among all these three. Then small intestine is the site of complete digestion of the food, as well as the maximum absorption takes place in the small intestine. And it's a very important question for your board exam, that how small intestine is modified for maximum absorption. Small intestine's inner wall is modified into a finger-like projection known as a villi. Villi is a plural word, its singular is villus. Villi are small finger-like modifications of the inner fold of small intestine so that maximum absorption of food can take place. देखिए बच्चों, ये एक सिंपल वॉल है, जब फूड यहां से पास होगा तो उसको कम स्पेस मिलेगा, कम एरिया मिलेगा, बट यही जब स्पेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में चेंज हो गया है तो फूड को पास होने के लिए जो एरिया मिलेगा, फूड को एब्सॉर्ब होने के लिए जो एरिया मिलेगा, दैट विल बी वेरी लार्ज. As well as the second advantage of the villi is it is highly rich in blood capillaries. Due to the blood capillaries, it can directly absorb the food. This is the diagram of villi. The uppermost layer or the outermost layer is of epithelial cells. Mainly it is composed of cuboidal epithelium, which is best for absorption of food, as we studied it in the 9th class tissue chapter. Then it has a lymph capillary named as lacteal, so that the proteins which cannot be transported through blood can be transported through that lymph capillary. Then there is a complex network of blood vessels around it, so that absorption of food can easily occur and quickly occur. जैसा कि बच्चों हम इस विलाय के स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं, काफी सारा एक कॉम्प्लेक्स ब्लड नेटवर्क बनाया गया है. ये जो सब ये दिखाई गई है बीच की वॉल्स, ये सब ब्लड वेसल्स की वॉल है. कैपिलरीज है बेसिकली, ताकि फूड को जल्दी से जल्दी एब्जॉर्ब कर सकें. ये एपिथेलियल लेयर है, ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है ताकि एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम और जल्दी हो सके. इसके बीच में ये ब्लैक जो देख रहे हैं आप, ये लैक्टियल है, एक लिम्फेटिक वेसल है. लिम्फेटिक कैपिलरी बोलते हैं इसको बेसिकली. ये इसलिए है क्योंकि कुछ लार्ज साइज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते, वो इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो सके. सो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट हाउ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज मॉडिफाइड फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन. Before studying the next part, large intestine, we'll study the digestion process in the small intestine. There are various secretions which are secreted in the small intestine. The first secretion is done by the liver. As we studied, that liver is the gland, digestive gland, which is present on the right side of the abdominal cavity, in front or opposite to the stomach. Liver is the largest gland of our body. It is red and vascular, that means highly blood capillary rich network containing organ. It is bilobed. Its left lobe is smaller and right lobe is larger one. It secretes a juice, it secretes a digestive juice named as bile juice, which is stored in the gallbladder. And from the gallbladder, by the help of bile duct, it is released into the pancreatic duct, which is also referred as hepatopancreatic duct. Through that duct, it is secreted into the duodenum, that is the part of small intestine. तो बच्चों, liver largest gland है, ये एक जूस सिक्रीट करती है, डाइजेस्टिव जूस, जो बाइल जूस है. बाइल जूस गॉल ब्लैडर में टेम्परेरी स्टोर होता है और बाइल डक्ट की हेल्प से हिपैटोपैनक्रेटिक डक्ट में डाल दिया जाता है. हिपैटोपैनक्रेटिक डक्ट से ये जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट किया जाता है, जो क्या है बच्चों, ड्यूडेनम पार्ट में रिलीज होती है. बाइल जूस का नेचर बेसिक होता है, क्योंकि जो फूड ऊपर से आ रहा है वो एसिडिक है, तो ये बेसिक नेचर इस एसिडिक फूड को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज. दूसरी चीज बच्चों, जो भी एंजाइम्स आगे चलकर एक्ट करने वाले हैं इस लॉन्ग कॉयल में, इस स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो सब बेसिक एल्कलाइन एनवायरनमेंट में एक्ट करेंगे. तो इसलिए बाइल जूस का नेचर एल्कलाइन होता है.
नेक्स्ट बच्चों, लिवर उसके अलावा बाइल जूस सीक्रेट करने के अलावा भी काफी सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे कि स्टोरेज. इट हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ विटामिन एज वेल एज आयरन. Along with that, it helps in the storage of reserve food in humans or in animals, that is glycogen. हमने बच्चों पहले रिजर्व फूड ऑफ प्लांट पढ़ा था, वो स्टार्च था. तो हमारी जो बॉडी है, ह्यूमंस की जो बॉडी है, उसमें जो रिजर्व फूड है दैट इज ग्लाइकोजन एंड दैट इज फॉर्म इन द लिवर इटसेल्फ. उसके साथ साथ ये विटामिन को भी स्टोर करता है. दूसरा है बच्चे डिटॉक्सिफिकेशन. डी मतलब रिमूवल, टॉक्सिक मींस पॉइजनस. The conversion of poisonous substances into non-poisonous substance, that is known as detoxification, is done by liver. Next, synthesis of blood plasma. Liver also helps in the synthesis of blood plasma, that is the liquid portion of blood, which we'll study in the next topics of this chapter, that is transportation. Next function of liver is it forms the glucose from the excessive organic acids present in the body. जितने भी हमारी बॉडी में एक्सेसिव ऑर्गेनिक एसिड्स हैं उससे ग्लूकोज बनाने का काम भी लिवर करता है. बट इसका जो मेजर फंक्शन है बच्चे वो है बाइल जूस. उसका फंक्शन हम पढ़ने वाले हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा और उसे लिखकर प्रैक्टिस कीजिएगा. बाइल जूस इज द डाइजेस्टिव जूस ऑफ लिवर विच इज सिक्रेटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन बाय हेपेटोपैनक्रेटिक डक्ट. बाइल जूस इज कंपोज्ड ऑफ टू कंपोनेंट्स. वन इज बाइल सॉल्ट्स एंड अदर वन इज बाइल पिगमेंट्स. It is the only digestive juice which does not have any digestive enzyme but still helps in digestion. ये एकमात्र ऐसा डाइजेस्टिव जूस है जिसमें कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, फिर भी ये डाइजेशन में हेल्प करता है. उससे पहले हम बाइल पिगमेंट्स का फंक्शन पढ़ते हैं. ये आपके सिलेबस में नहीं है 10th के, बट फिर भी पता होना चाहिए. ये दो पिगमेंट बनाता है हीमोग्लोबिन से. वन इज बिलिरुबिन एंड अदर वन इज बिलिरुबिन. जो हमारा फीसेस है, जो हमारे फीकल हमारा सॉलिड वेस्ट है, उसका जो रेडिश ब्राउन कलर है उसके लिए ये पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है. नेक्स्ट इज बाइल सॉल्ट्स. बाइल सॉल्ट्स हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स. फैट्स आर वेरी लार्ज कॉम्प्लेक्स ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स. दोज लार्ज कॉम्प्लेक्स ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स आर ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स, इनटू द स्मॉलर साइज फैट मॉलिक्यूल्स known as emulsified fat by the action of bile salts. This process is known as emulsification of fats. The conversion of large fat globules into the smaller fat globules by the activity of bile salts is known as emulsification of fat. फैट का डाइजेशन फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में होता है. ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है. इसकी स्टार्टिंग हो चुकी है कहां? स्मॉल इंटेस्टाइन में. किसकी एक्टिविटी से? बाइल सॉल्ट की एक्टिविटी से. सो दिस इज व्हाट द liver, its function and the function of bile juice. Next secretion which is to be secreted in the small intestine is from the pancreas, the third digestive gland. Pancreas also releases a digestive juice which is named as pancreatic juice. That pancreatic juice is also alkaline in nature, just like the bile juice, because the acidic food must be neutralized. The enzymes of pancreatic juice are very important for your board exam. It releases 5 enzymes, out of which 3 are mentioned in the NCERT book: trypsin, pancreatic lipase, and pancreatic amylase. But you must have to read all these 5. The 5 enzymes secreted in the pancreatic juice are trypsin, chymotrypsin, carboxypeptidase, pancreatic lipase and pancreatic amylase. हमने बच्चे इससे पहले पढ़ा कि डाइजेशन में हम जो भी न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, मेजर न्यूट्रिएंट्स उसमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स. सबका डाइजेशन स्टार्ट हो चुका है बच्चे. स्टार्च का डाइजेशन माउथ में स्टार्ट हुआ था, प्रोटीन्स का डाइजेशन स्टमक में स्टार्ट हुआ, और फैट्स का स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो हमने इससे पहले बाइल जूस के एक्शन में पढ़ा. बट कोई भी चीज कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं हुई. यहां कंप्लीट डाइजेशन होना शुरू हो जाएगा. जो प्रोटीन्स बचे हैं ऊपर से कुछ, और जो पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस बने हैं स्टमक में, those are digested into dipeptides, another simpler form of proteins. It is not the simplest, it is the simpler form of proteins which is to be further digested. प्रोटीन्स पर एक्ट करता है ट्रिप्सिन, पेप्टोन्स पर एक्ट करता है काइमोट्रिप्सिन, और प्रोटियोसिस पर एक्ट करता है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज. इसीलिए तीनों एक सीक्वेंस में लिखे गए हैं. प्रोटीन्स पर एक्ट करता है ट्रिप्सिन, पेप्टोन्स पर काइमोट्रिप्सिन और प्रोटियोसिस पर कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, और इन तीनों को अल्टीमेटली तोड़ दिया जाता है डाइपेप्टाइडेज में, डाइपेप्टाइड्स में. सॉरी. नेक्स्ट, इमल्सिफाइड फैट बाइल सॉल्ट्स के एक्शन से बने. दोज इमल्सिफाइड फैट्स will be converted into fatty acids and glycerol.
by the activity of fourth enzyme present in the pancreatic juice, that is pancreatic lipase. Always remember बच्चों, lipase enzyme is always related to digestion of fats. Next, the starch which is left for digestion and the dextrins which are formed in the mouth are to be acted by pancreatic amylase, which is the fifth enzyme of pancreatic juice. It is to be converted into maltose, the simpler form of, it is a disaccharide, the simpler form of a carbohydrate, simpler form of a sugar. It is not the simplest form, it is the simpler form. इसके बाद डाइजेशन अभी बचा है, वो होगा intestinal juice करेगा, the third juice which is to be released in the small intestine. We'll study it later. So this is the pancreatic enzyme, the action of pancreas in digestion. It is a very important question for your board exam. Read the enzyme name and name of the enzymes very carefully and practice it by writing it in your draft book. The next secretion in the small intestine is intestinal juice, which is released by the inner wall of small intestine itself. नेक्स्ट जो सिक्रेशन हमने पढ़ना है बच्चे, थर्ड सिक्रेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो खुद स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल करती है, दैट इज द इंटेस्टाइनल जूस. इंटेस्टाइनल जूस में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, उसमें से हम कुछ एक पढ़ेंगे, 2 या 3 बस. पहला है उसमें से पेप्टाइडेजेस. हमने बच्चे पढ़ा प्रोटीन्स का डाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक. प्रोटीन्स अल्टीमेटली डाइजेस्ट होने चाहिए अमाइनो एसिड्स में, बट हमने कहीं भी इनका नाम नहीं पढ़ा है अभी तक. डाइपेप्टाइडेजेस जो पैंक्रेटिक जूस की एक्टिविटी से बनते हैं, उन पर एक्ट करता है ये एंजाइम, दैट इज पेप्टाइडेजेस. इट इज आल्सो रेफर्ड एज इरिप्सिन. इसको इरिप्सिन भी कहते हैं, एंड इट विल कन्वर्टेड इनटू द फाइनल प्रोडक्ट, द सिंपलेस्ट प्रोडक्ट, दैट इज अमाइनो एसिड्स. नेक्स्ट हमने पढ़ा बच्चे शुगर्स आ रही हैं, कुछ शुगर हम कर लेते हैं जो शुगर क्रिस्टल्स हैं, दैट कंटेन सुक्रोज एज वेल एज सुक्रोज इज प्रेजेंट इन आवर फ्रूट्स. Those sugars are converted into glucose and fructose, the simplest form of sugar, by the activity of invertase. Invertase is also referred as sucrase. The maltose, which is formed by the starch as well as the activity of the pancreatic juice, that maltose is converted into glucose and glucose. It is a disaccharide formed by the 2 glucose molecule combining together. So it will be broken down into the monomers glucose by the activity of maltase. All these enzymes are released in intestinal juice. So that's how digestion is completed in small intestine. So if someone asks you what is the site of what is the site of complete digestion? Small intestine. So this is what the fate of nutrients is. The nutrients which we are taking in our body, the fate, उनका जो अंजाम है, जो final result है वो ये. Carbohydrates are broken down into glucose, that is the simple sugars. Fats are broken down into amino acids and glycerol, the simplest form. Proteins are broken down into amino acids. It is also a very important question for your board exam. So learn this topic very carefully and by writing practice it in your notebook. The next part is large intestine. In large intestine, the absorption of water takes place from the digested food. So the water content of our body cannot be released out of the body unnecessarily. Large intestine में बच्चों absorption of water होता है, ताकि जो water है वो हमारी body के अंदर maintain रह सके. Rectum temporarily store the feces, which is a part of large intestine, and then the feces, that is the solid fecal matter, removed out of our body through anus. Anus is controlled by a sphincter known as anal sphincter, which control its size. Through this anus, we remove the waste material out of our body. And the act of removal of that solid waste material, that is feces, out of the body is known as a defecation. और उस एक्ट को जिससे हम अपनी बॉडी से सॉलिड वेस्ट मटेरियल को रिमूव करते हैं, दैट एक्ट इज नोन एज डिफिकेशन. उसे हम क्या बोलते हैं? डिफिकेशन बोलते हैं. The last topic of your nutrition topic is dental caries. As we all know, when we eat food, some part of those food particles will remain trapped in between our teeth. On those trapped particles, microorganisms act. हम जानते हैं बच्चों, जब हम फूड खाते हैं तो कुछ पार्ट उस फूड का हमारे टीथ के बीच में रह जाता है और उस पर माइक्रोऑर्गेनिजम्स एक्ट करते हैं. Due to the action of microorganisms, certain acids are formed.
as microorganisms perform anaerobic respiration. हम जानते हैं microorganisms ज्यादातर anaerobic respiration perform करते हैं और anaerobic respiration will result in the formation of acids. Due to the formation of acid, the upper covering of our teeth, that is known as enamel, will starts to corrode. ये धीरे धीरे corrode होने लगती है. After that, the acid will reaches to the next cavity known as a dentine, and dentine will starts to corrode, and that will results in the formation of cavities, holes बन जाते हैं. धीरे धीरे जैसे enamel corrode होगा, enamel कुरेदा जाएगा, उसके बाद एसिड जो है वो डेंटाइन के कांटेक्ट में आएगा, एंड देन अ कैविटी इज फॉर्म्ड. हम सबने कोलगेट की जनरल सी एड में देखा है बच्चे किस तरह से कैविटीज बनती हैं. द सेम प्रोसेस हैपेंस when some particles of food will remain in our teeth. That will then reach, the acid will then reach to the pulp cavity, and that will release in the bleeding gums. उसके बाद मसूड़ों से खून आने जैसी प्रॉब्लम्स का सामना हमें करना पड़ता है. These all problems constitute in one term that is known as dental caries. The formation of small cavities or holes in the teeth due to the trapped food and by the action of microorganisms over that is known as dental caries. There is one more problem associated with the dental caries, and that is dental plaque. Due to formation of that acid, a yellowish sticky layer, चिपचिपी एक लेयर जम जाती है हमारे दांतों के ऊपर, and that deposition of yellowish sticky layer of acid due to anaerobic respiration by microorganisms on the trapped food particles is known as dental plaque. There is a remedy. इसका एक उपचार है बच्चों. क्या? Regular brushing at least twice a day. That is the remedy of dental plaque.